Chairman sir, Vice Chairman sir, Principal sir, our guest of the day, Mr. Puran Singh Rawatji, respected coordinators, worthy teachers, and my lovely students. A very good morning to you all. I would first of all welcome each member of the new school council year 2021-22 and wish them all the best to perform their duties in best manner. May God grant you strength to justify your duties in the best possible manner. The school council is formed to run the school in a democratic way. It also provides opportunity to the students to prove themselves as a future leader and a responsible citizen. The Investiture Ceremony is a solemn occasion where all the young students are prepared to don the mantle of leadership and discharge the responsibility entrusted upon them by the school. Our school acknowledged the budding young leaders and reposed the trust in them. As a school council member, you have rights and duties hand in hand. It's not just that you wear the sachet, click the group picture and upload on the Facebook. Your rights are to counsel your juniors, your classmates about the GRD rules. Motivate them to follow school rules in letter and spirit. Your duties are to support the coordinators and the teachers to run the school as per the vision of and mission of Sri Guru Ram Das Ji. You should come forward to maintain self-discipline, policy of GRD International School, and support in managing various activities. You should make sure that healthy competition among students exists. Most important duty is to raise the goodwill of our school in the societies. Beside all your important duty, you must not forget to wish your teachers, your elders, which slowly you have been forgetting, and reason is the pandemic time that you were not regular with your habits. So please remember all these things. That is, you have to wish your teacher, who you have to wish, that is your kindergarten teacher, who brought you up when you were small. Your primary class teacher, who loved you the most. Your middle class teacher, whose support you get every time. Have respect for the support staffs, whose unconditional help can never be denied. And each official member of your school holding any post. You must wish them and take their blessings. Blessings you always need to grow on a right direction and shine like a star. Have love for small kids and be a protector of them. Last but not the least, each of you are requested to maintain the dignity of your post. I know the children who are not selected today are also equally deserving, but everyone can't be the head. We have to follow certain process. The students who could not be considered will surely get chance next time. They must not be disappointed. You all are supposed to work together happily and don't keep any grudge against the one who are selected today. Rather, congratulate them. So, the same respect you get next time. I would not take much time.
So many speakers were already there. So let us start our investiture program. I wish you all the best for your future and wish you all a very happy Children's Day. Jai Hind. It's indeed my pleasure once again to welcome you all to this Investiture Ceremony. I welcome our Honorable Chairman, sir, High and Honor Vice Chairman, sir, our guest for the day, Mr. Puran Singh Rawatji, the epitome of grace and dignity in my definition, our very much loved Principal, sir. High on regards, supportive of each that we have, one sitting here, Vice Principal Ma'am. Guru in the truest form, as my principal described, the faculties here at GRD, and very close to my heart, the center of our lives, our dear students. I wish you all a very happy Children's Day. Today, it is indeed a very important day when we talk about the session 21-22, as we elect our council. Before we announce the council, I would like to share with you the process it went through so that you understand that getting this opportunity is not just by chance. You have gone through the process and the one most deserving reaches to this position. As Principal Sir told you earlier, the process starts when the teachers who have been observing you for years in this session, they give your registration's nomination to the higher authorities. The higher authorities, after having further deep detailed discussion, I remember my principal taking 2 days to ensure everyone get the best what they deserve. And then it goes to the nominations. Making you ready, as my principal said, for the civil service officers one day. He took you through a proper personal interviews. And based on that, considering your ability, everyone is not academically sound. Everyone is not culturally sound. We all possess a different skill. And based on that skill, you all find a place in this council. Understand that, as popularly we say, all the five fingers are not the same. And similarly, as recently sir had said, the sword and the needle have different work to do. So you all have your part to do, and based on that you have been selected. As I go further, I want to appreciate each and every one of you, because the most beautiful part about this process was when these children themselves coming up to me that we want to be part of the council. That enthusiasm deserves a big appreciation. I appreciate everyone. Because more the contribution, more the participation, it makes each spot on this council more precious and indeed more prestigious. Because you come out after a good competition, and healthy competition, that's what we all proceed in this life with. Before, as I go with the announcements, 2 examples that I would like to portray. When we go for a council, there are 3 things that we try to teach you, other than your academics. That is, to impose and to include the leadership skills in each child, to ensure that you have good interpersonal skills, and very importantly, the idea is the currency of the modern time. So you must be creative in your mindset. To ensure that, we want that everyone who come up with this council should be taking these 3 things very seriously. Understand, as a child very nicely said, it's a cliche, with power come responsibility. Make it sure that this is not the day of the celebration of the council. Every day should be the celebration of the council, that when principals are saying the council is in the corridors, you cannot hear us about sound in the corridor. That should be your achievement. Badges and sachets passes by each year. What remains is the qualities that we all possess. And that's what you should always be remembered for. At a young age, having the leadership qualities, as I mentioned before. You all must know about Malala Yousafzai. Have you heard her name? Yes, sir. Malala Yousafzai is the youngest Nobel Prize winner. She is the biggest face for the girls' education in the world. Giving a brief summary, she got shot for the education. She wanted to pursue education, and the situation in her country did not permit that. But did she give up? Answer? No. Instead, like in grade 9, you have a poem, Wind. A strong fire has the capacity, as much you blow, it flourishes. So the people who are stronger, they flourish. And same should be with you. You learn the skills through this. And the second very important example that I would like to quote is
Greta Thunberg. Have you heard her name? Yes, sir. Greta Thunberg, a 16-year-old Swedish girl, she started sitting in out of the parliament alone, protesting in what she believed in. All I'm trying to tell you is you're not anymore young to understand the responsibilities. You are always good enough to make a change in this world. So understand, at the age of 13, 14, people are trying to make big changes, and I want you to be as good as someone in Sweden or someone sitting in Birmingham, because that's what we try to provide you with, the international skills that possible in this GRD. So, finally coming to the thing, that is the Investiture Ceremony. I would request our honorable dignitaries to join me here for the council process, please. self-discipline, in terms of self-discipline, academics, academics, and activities. and activities.
I'll work as a team to make our school the best institution of the area. I'll be always loyal to the school and will never break the discipline of Jihad International. I shall always be proud of being Jihadians. I shall also continue to contribute to the growth and well-being of our motherland, India the Bharat. Jai Hind. शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाई। अभी मैं देख रहा था, बहुत सरलता के साथ सर बता रहे थे कि सर ने कंडक्टर का भी काम किया है। ऐसा नहीं कि सर कंडक्टर थे। देखिए, आज के दौर में एक चीज आपको समझनी होगी कि सरलता सहजता का भाव जो है वो गुरु में होना चाहिए। सरलता और सहजता और अनुशासन यानी डिसिप्लिन जो है, और डिग्निटी, डिसिप्लिन और डिग्निटी छात्रों में होनी चाहिए। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, डिग्निटी नहीं है, तो यानी आप डाउटफुल हैं, है ना। इसलिए डिग्निटी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सर ने कहा कि मैं कंडक्टर का भी काम किया है। सर का कहने का तात्पर्य यह था कि वो बसों में बच्चों को अतिरिक्त जिम्मेदार, मतलब सर ने अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हुए बच्चों को घर तक भी छोड़ा है, घर से लाए भी हैं। तो ये अतिरिक्त जिम्मेदारी है। अभी आप लोगों को बैच लगा, तो आप ये नहीं कि आप औरों से सुपीरियर हैं, इसलिए बैच नहीं लगा। इसलिए लगा कि आपको जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है, आप और जिम्मेदार बने। जब किसी पुलिस अधिकारी के स्टार बढ़ते हैं कंधों में ना, तो वो जिम्मेदारियां बढ़ती है। स्टार बढ़ गए यानी कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर बनता जा रहा है, उनको और जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये आपको और जिम्मेदारी दी गई है, और डिसिप्लिन में रहिए, डिग्निटी मेंटेन करिए। तो डिसिप्लिन के बिना तो कुछ नहीं। भगवान राम को भी कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। तो मर्यादा के अंदर ही डिसिप्लिन आती है। सब लोगों को व्यवहार ऐसा करिए जो मर्यादा के अंदर रहे। जैसा आप घर में अपने मम्मी पापा के साथ व्यवहार करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा व्यवहार करना है टीचर के लिए। क्योंकि आप देखिए, अब तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अब तो गूगल भी टीचर है। तो गूगल इज आर्टिफिशियल टीचर, रियल टीचर तो यही है ना। अब तो जो भी आप जवाब, अब तो देखिए हम लोग के जमाने में, सर के जमाने में पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट, बहुत हम लोग परेशानियों के दौर से हम लोग गुजरे। क्योंकि हमारे जमाने में हम लोग अगर कुछ जानना होता तो ट्यूशन पढ़ना, ट्यूशन हर कोई नहीं पढ़ सकता था। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते थे। जिनकी नहीं है तो वो गाइड से पढ़ते थे। बहुत टफ टास्क था। मगर आज ऐसा नहीं है, आज तो गूगल भी आपको बता देगा, है ना। मगर पाठशाला जो है यानी स्कूल से ही आप सब कुछ सीखेंगे। डिसिप्लिन सीखिए, और आप ऐसा नहीं कि आप सीखेंगे, आप सिखाएंगे भी। सर कई बार कहते हैं, सर बच्चों से भी सीखते हैं, हम लोग भी सीखते हैं। एक छोटा सा वाक्य बताता हूं सर, हो सकता है कईयों ने सुना भी हो। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार लेके जा रहा था। अब उसका जो है कार पंचर हो गई। अब कार पंचर हो गई तो वो बनाने लग गया। बनाने लगा तो स्टेपनी से थोड़ा सा ऊपर उठाया तो कोई दौड़े आया। जब वो थोड़ा कुछ इधर वर्क अपना कर रहे थे कार में, और गाड़ी खोलना या और सामान निकालना, कोई ऐसा मतलब नोटी बॉय टाइप का या कोई भी मतलब नोटी व्यक्ति आया और वो नट निकाल के ले गए। जो नट लगाने थे 4 नट वो निकाल के ले गए। अब बड़ी पशुपेश में कि अब गाड़ी चले कैसे, सब लोग बड़े पशुपेश में गाड़ी चले कैसे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, हर कोई आपको ज्ञान हर कोई दे सकता है, ज्ञान किसी से भी लेना चाहिए। उधर से एक पागल जा रहा था, तो वो बोला क्या हुआ, उसने बोला चलो तुम जाओ, तुम क्या बताओगे। अरे बोला नहीं बताओ तो क्या हुआ। बोले नहीं आप जाइए, आप बताएंगे, आप तो पागल है।
बोले नहीं बताओ तो हो सकता है मैं कुछ बताऊं। तो उन्होंने कहा देखो ये इसमें नट कोई लेके भाग गया। बोले कोई बात नहीं, आप बाकी टायरों में से एक एक नट लगा दीजिए इसमें, आप कुछ दूर तो चले जाएंगे। तो एक एक नट उन्होंने बाकी टायरों को एक एक नट लगाया और कुछ दूर जहां तक पंचर लगना था वहां तक। तो इसलिए आप जो है किसी से भी सुझाव ले सकते हैं, किसी से भी सलाह ले सकते हैं। और शिक्षा ऐसा नहीं है, शिक्षा बच्चे भी देते हैं। तो डिसिप्लिन में रहिए। और अभी आप लोग, मैं देख रहा था सर से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा, चूंकि ये एकेडमिक संस्था है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हमारे यहाँ बहुत सी जो ट्रेनिंग एकेडमिक संस्थाएं आ गई। जैसे काठगोदाम में DIG सेंटर खुला हुआ है, NDRF का सेंटर आपके गदरपुर में एस्टेब्लिश हो गया है। तो इनको जरा वहाँ ले जाइए बच्चों को। और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ से आपको एक दिन का समय दिलाऊं और उस दिन आप इन सारे बच्चों को ले जाइए, तो वहाँ दिखाइए। सबसे ज़्यादा वहाँ ये अगर मतलब सीखेंगे बच्चे, एब्जॉर्व करेंगे, डिसिप्लिन एब्जॉर्व करेंगे। और एब्जॉर्व करेंगे, आप ऑब्जर्वर भी बनिए, ऑब्जर्वर भी बनिए, अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करिए। कई बार क्या होता है, लोग खराब चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करिए। अच्छी चीज़ें लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके मम्मी पापा को अच्छा लगता है। आप जो आपके मम्मी पापा को जैसा व्यवहार करते हैं वैसा औरों के साथ भी करिए। जैसा अपने भाई बहनों के साथ सर अक्सर बोलते हैं, तो हम लोग सर से सीखते हैं। मैं आपको भी बात बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए सीखिए। और जैसा सर ने बताया, जब सर हम लोग जब ट्रेनिंग के दौर में थे, सन 2004 में हम पास आउट इन मास कम्युनिकेशन किया, हमने पास आउट हो गए, हमारा सिलेक्शन ATV न्यूज 18 में हो गया। तो हम लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जैसा आपने बताया कि आपने कंडक्टर का काम भी किया है, वैसे हमने जो स्टैंड होते हैं, कैमरे के स्टैंड होते हैं, 50-50 किलो के, 35-35 किलो के बड़े हैवी स्टैंड होते हैं। तो जब हमें शूट के लिए कहीं दूसरी जगह जाना होता था, कई बार हम लोग क्या बड़े VIP रहते, चीफ मिनिस्टर रहते, तो उनके साथ प्लेन में भी शूट करना होता है, या उनके साथ वो जा रहे हैं चुनाव के दौरान, तो एक दिन की उनकी दिनचर्या कवर करनी होती है। तो हेलीकॉप्टर में या प्लेन में उतना स्पेस नहीं होता कि आप कैमरामैन को भी ले जाएं। तो हमने स्टैंड भी अपने कंधों पे ले गए हैं। तो काम बड़ा है, काम कोई काम छोटा नहीं है, सब काम बड़ा है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और जितना फौज में या आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कहा जाता है कि जितना आप ट्रेनिंग में टफ टास्क करेंगे, मतलब अपना जितना पसीना बहाएंगे, उतना आपको लड़ाई में खून कम बहाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ जितनी पढ़ाई करेंगे, जितने डिसिप्लिन में रहेंगे, आगे फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, है ना, उन्नति की दिशा में अग्रसर रहेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदैव उन्नति की ओर आप लोग अग्रसर रहें। बेस्ट ऑफ लक और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
Slow it down. तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा सिद्ध तेरा, ओ तेरा पीछे पड़ा। Slow it down. Slow it down.
मुड़िया बैठ के ब्याह के जावांगे सोनिया तू मुड़िया